Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to our channel. How are you all? We hope you all are good and doing well. तो गाइज आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं ना उसका टाइटल जो है वो काफ़ी मुझे सही नहीं लग रहा। बांग्लादेश इज़ द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है? हालांकि हमने बांग्लादेश के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे हैं और बांग्लादेश के बारे में ऐसा इसने क्यों भाईजान लिख दिया, ये हमें पहले वीडियो देखना। अब भेजा गया जिस बंदे की तरफ से वो भी बांग्लादेशी है हमारे भाई, और उन्होंने ये वीडियो क्यों भेजा है देखते हैं कि इसमें बांग्लादेश के बारे में क्या बातें की जा रही हैं। तो लेकिन मुझे शौक कर दिया इस टाइटल हाँ, इस टाइटल की वजह से मैं खुद हैरान हूँ और शौक हूँ कि आखिर इसने भाई ने ये टाइटल क्यों दे दिया है वीडियो को। तो इसलिए मैंने देखना बहुत ज़रूरी समझा। हो सकता है हम इसकी करेक्शन कर पाएँ या कुछ चीज़ें इसमें जो बताई गई हैं वो गलत हों या सही हैं, या जो भी है जो वो कह रहे हैं। पहले वीडियो देख लेते हैं वीडियो क्या है, उसके बाद हाँ फिर बाद इसके ऊपर बात करते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। Let me tell you about one of the worst countries in the world. Its capital is one of the least livable cities, incredibly polluted and one of most densely populated. Traffic is insane. Poverty is just everywhere. Some of you have been asking me for a video about Bangladesh, and I can't help but ask, why? Is there even anything good about Bangladesh? Wow, Night Fam, it's actually quite difficult to say all of these bad words. But sadly, every negative thing I've said is what some people instantly think when they hear the country Bangladesh. They think it's back-minded, third-world country with no power. But let this video prove you wrong. This is what the world never knew about Bangladesh. हमने टाइटल उसने ऐसा दिया था, मैं खुद शौक। First up, I bet most of you don't know that YouTube was co-founded by a Bangladeshi German. Yes, the 2 billion people from all over the world who use this platform have to thank Jawed Karim, who even uploaded the very first YouTube video. Still on the internet, would you believe that the largest internet school in the world, which has educated over 10 million students, was also founded by part Bangladeshi Salman Khan, and the longest female-led government in the world also in Bangladesh. In fact, female Bangladeshis are so efficient and hardworking that 80% of the country's workers are actually women. Now, I am personally excited to know that Bangladesh is also a welcoming place for vegetarians like me. So much fresh fruit around, it looks so good. No wonder it's also one of the least obese countries in the world. And from keeping healthy to keeping peace, Bangladesh is also a major contributor to the UN peacekeeping operations, having the 3rd largest military in South Asia. Now, Night Fam, here comes the most impressive of all. Bangladesh was once the 2nd poorest country in the world, but now it's one of the fastest growing economies. See, only 3 years after becoming an independent country in 1971, extreme hunger killed 1.5 million Bangladeshis. Add to that the fact that the country has always been hit by massive floods. For a long time, Bangladesh was incredibly poor and politically unstable. It's never easy to rebuild your country when things are so difficult. But because bad past doesn't mean bad future, Bangladesh made an impressive shift. Not only in fighting poverty over the years, but now being a model for development for the rest of the world. Because of its booming garment industry, some people call Bangladesh the next China, economically speaking. After all, it's one of the top exporters of clothing in the whole world. And having all of these positives in mind, the land of Bengal certainly deserves much more respect than the world gives it. As someone who comes from a highly underrated country of Poland, a very globally unpopular country where so many people don't know much about it, I am very passionate about giving credit
to countries for their positives. Bangladesh may be a young country. And of course, it has so many things to work on. I could literally make a full video based on just the negatives, but why would I do it? There are so many people already who just focus on the negatives. This video is different. The fact that Bangladesh managed to become one of the fastest growing economies, literally from being the second poorest country in the world, May Bangladesh be the voice of all the underrated nations that are on the way to the top. ओके बडीज, दिस वाज द वीडियो एंड पहले तो हम थोड़ा सा यार शुरुआत में काफ़ी जो है ना शॉक हो गए थे कि भाई ने जो टाइटल दिया है बांग्लादेश के बारे में ये इन्होंने क्यों दे दिया है कि, और उसके बाद फिर उन्होंने जब चीज़ें गिनवाना शुरू की, उनका ये मानना था कि जब बांग्लादेश का नाम आता है ना कहीं भी तो मोस्टली पीपल जो है ना वो ये सोचना शुरू कर देते हैं, उनके माइंड में ये आ जाता है पुअर लॉग, मतलब इस तरह का देश है, पुअर देश, ये वो सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश का पॉजिटिव दिखाया है और जो उन्होंने पॉजिटिव बताया है बिल्कुल एक एक बात उन्होंने सच बताई है। और वही देश जो 1971 में और उसके बाद हंगर से इतनी डेथ होगी वहाँ पर, सैलाब, फ्लड्स, इतनी चीज़ें, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो निकल कर, और आप देखिए कि आज बांग्लादेश जो है वो कितनी ज़बरदस्त स्टेज पर है। बिल्कुल। कैसा वीडियो कैसा लगा है? स्टार्ट में शौक हुए थे? हाँ, स्टार्ट में एक दफा टाइटल देख के ना हैरान रह गए थे कि यार हमने इतनी वीडियो बांग्लादेश की देखी है लेकिन इसने क्या लिख दिया। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जब बताया फिर दिल को सुकून हुआ, नहीं यार बिल्कुल बिल्कुल। हसन भाई कैसा लगा? वीडियो वाकई बहुत अच्छा था। शुरू में वाकई शौक हो गए थे, पर उन्होंने लोगों को झूठा किया, जो इसके बारे में बातें करते थे उनको झूठा किया। नेगेटिव वीडियोस जो बनाते हैं ना उनके बारे में। तो बाकी जो है बांग्लादेश के बारे में आपने देख लिया गाइस के बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है बांग्लादेश की, और हमने बेस्ट थिंग्स बांग्लादेश की वो भी भाई ने एक एक चीज़ बताई है और बहुत अच्छे तरीके से बताई है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप टाइटल और थंबनेल से आपको क्या लग रहा था कि वीडियो कुछ ऐसा होने वाला है? हमें भी ऐसे ही लगा था स्टार्ट में, लेकिन वीडियो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया बाद में, तो अच्छा लगा। उनका एक जो तरीका था समझाने का वो बहुत ज़बरदस्त था। तो अभी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।